हेलो एवरीवन, आप सभी का जीरो टू जॉब रेडी पाइथन फुल स्टैक सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इसमें हमने दो प्रकार के हेडर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल हेडर एंड वर्टिकल हेडर को हम कैसे टेबल के अंदर बनाते हैं के बारे में हमने फुल डिटेल में दो टेबल बनाकर, एक हॉरिजॉन्टल हेडर के लिए और एक वर्टिकल हेडर की के लिए बनाकर मैंने आपको बताया था। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल हेडर एंड वर्टिकल हेडर को कैसे बनाते हैं। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टेबल विद इन अ टेबल। टेबल के अंदर टेबल को कैसे बनाते हैं, टेबल विद इन अ टेबल। तो टेबल के अंदर टेबल को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम नोटपैड में। नोटपैड का फ्रेश पेज हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें HTML का डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, तो HTML टैग दे देंगे, HTML टैग, देन बॉडी टैग। जैसा कि हमने प्रीवियस कोड हमने टेबल क्रिएट किया था, तो देन बॉडी टैग, आफ्टर दैट सेंटर टैग। नाउ then start the table, table tag, start the table with the table tag। टेबल टैग के साथ हम यहाँ पर डिटेल में इसको, तो जो हम टेबल बनाएंगे, टेबल में को अलाइन कर देंगे सेंटर तक। बॉर्डर बॉर्डर इज इक्वल टू 10 एंड बीजी कलर ऑफ टेबल, येलो कर देंगे, बीजी कलर ऑफ टेबल येलो। टेबल रो, देन टेबल डेटा टैग, टीडी। टेबल टेबल डेटा के बाद अब हमें टेबल के अंदर टेबल क्रिएट करना है, तो अगेन हम टेबल टैग दे देंगे। जो उसके अंदर टेबल होगी, इज आल्सो अलाइन सेंटर, it is also aligned in center। border border is equal to 10, border is equal to 10। bg color is equal to रेड दे देंगे। ठीक है। नाउ टेबल कैप्शन कर देंगे, कैप्शन टैग, कैप्शन फॉन्ट h3, फॉन्ट h3। टेबल कैप्शन में we will provide the personal, close the font, close the caption, close the caption। now now again start the table row, start the table row, table header, close the table header। table header is table header is then table data is close the table data, close the first close the first so table within a table, where we have write a code for our first row,
Now write a code for second row, table row. अगेन हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ को पेस्ट कर। तो सेकेंड रो का टेबल हेडर, टेबल हेडर यहाँ पर ब्रांच, टेबल डेटा, मैकेनिक, टेबल डेटा के क्लोज द टेबल रो. Now third row, again test. Third row, start with table row, close the table row. Now header, college name, and table data, college name is RGP. Now close the table row. Now close the table row. Close the table. Close the table tag, because the first table will be completed. And now close the table data. Table. Now close the table data. Close the table data. Now again start the table data. Now copy it again for second table. Copy it again, or you can rewrite the code for next table data, and then table, start with table tag, which line is equal to center, border is equal to 10, bg color is equal to bg color is equal to bg color is equal to green. Bg color is equal to green. Table caption, see, table caption, see, and qualification details, qualification details, qualification table tag with the headings H3, close the H3 headings, and now close the second table caption. So, caption. Now start the table row. Start the table row.
start the table row. Now table header, table header, table header is code, table header is code, table header. Now table data, table data. Now again table header. Now again table header is a school oblique college. Close the table header, close the table header. Now next table header is the year. Close the table header, close the table header, year. Now close the row, table row, close the table row. Now start the second row, table row with table data, college name, RKDF, yeah, Saraswati School, in table data, close the row, close the row, close the table. This is the first row of the table. Copy it for the second row. This is the first row. Copy it. Second row, table row, school, BSc, Saraswati, here, add a table row, again CBSC, school, Kendriya school, close the table. Now close the table data, close the center, close the center tag. Now close the body tag, close the body tag, close the HTML. तरीके से हमने एक पूरा कोड दिया है। टेबल विद इन अ टेबल क्रिएट करने वाले हैं। इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। इसमें हम टेबल विद इन अ टेबल, टेबल विद इन अ टेबल डॉट एच टी के नाम से सेव कर देंगे इसको। एंड नाउ वापस से उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने इसको सेव किया हुआ है। टेबल विद इन अ टेबल, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन विद इन माइक्रोसॉफ्ट एज। इस तरीके से आपको टेबल विद इन अ टेबल मिल जाएगी। आप देख सकते हैं एक पहली टेबल है। पहली टेबल के ऊपर ये कैप्शन दिया हमने, पर्सनल डिटेल्स। इसमें नेम अरुणेश, ब्रांच मैकेनिकल, कॉलेज RGPG। एंड सेकेंड है जिसमें सेकेंड आपका बोर्ड SSC, स्कूल कॉलेज सरस्वती स्कूल, ईयर 2025 ना, बोर्ड ये 3 दिए हमने यहाँ पे 3 रो में। स्कूल कॉलेज हमने यहाँ पे नाम दिया एंड ईयर दिया।
इस टाइप से आप टेबल विद इन अ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि टेबल विद इन अ टेबल कैसे हमें क्रिएट करना है। इसमें ये जो टेबल है इसका फॉन्ट थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसके फॉन्ट को ये हम रेड चूज कर लेंगे ताकि ये भी क्लियर हमें दिखाई दे। यहाँ पर लाइन सेंटर, बीजी कलर, चाहे तो हम यहाँ पे फॉन्ट रेड कर सकते हैं सेकेंड टेबल में। तो यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट कर दूंगा रेड, फॉन्ट इज इक्वल टू, अगर मैं रेड कर देता, देखते हैं क्या चेंज आता है। अगर मैं इसके फॉन्ट को रेड कर दूँ तो क्या चेंज, कुछ भी चेंज नहीं आता है। फिर से देखते हैं। सेकेंड टेबल है, सेकेंड टेबल, टेबल के अंदर फॉन्ट का क्या, फॉन्ट, फॉन्ट का टैग दे देता हूँ, फॉन्ट, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू कलर, कलर इज इक्वल टू येलो एंड फेस, फेस इज इक्वल टू एरिया। टाइप से फॉन्ट, या उसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करके देखते हैं क्या आता है। फॉन्ट, हाँ, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें। चेंज नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ इसको रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, फिर देखेंगे रिफ्रेश करके क्या चेंज आ रहा है इसमें। ये आपका रेड हो गया, रेड में क्लियर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम टेबल विद इन अ टेबल क्रिएट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।